Hey everyone, this is Dr. Nishta Jain and today we'll be starting with the basics of Excel. So before starting with the actual functions or with the actual features of Excel, let me tell you something. See, for example, whenever you purchase a mobile phone, what happens? What is the first thing you do? You have to switch it on, isn't it? Right? Now for switching on the mobile phone, क्या ज़रूरी है? Of course, the power button. So you should be aware, right? Where is the power button? How to use it? How to switch it on? Isn't it? I know it's a very simple example, but this is something you should understand, right? क्योंकि Excel में भी you should know where what is present, right? कौन सा option कहाँ पर present है? कौन से option को click करके what will happen? Isn't it? Yes or no? Yes? So similarly in Excel also you should know कौन सी चीज़ कहाँ present है. But before that you should know how to open Excel in your system, right? उसको launch कैसे करना है? You should know that, isn't it? So now the easiest way to launch Excel is what? Go to this search thing here. Okay, this search option in the taskbar. This is usually present in all the systems. Okay, just click on this and in this option here, in this bar here, type here to search. Just type Excel. So usually it is an inbuilt app in your laptop or system. ठीक है, तो क्योंकि ये inbuilt है, क्योंकि ये पहले से present है, so you can just simply open Excel. ठीक है, यहाँ से आपने open कर दिया. Now what? See now, there are people who don't have the licensed version of Excel या जिनके पास unlicensed product है या जिनके पास Excel है ही नहीं laptop में. So for that you first need to install Excel in your laptop. Okay, it's very easy to install, right? So even for that I can help you, but I'll take that in the next lecture. ठीक है कि install कैसे करना है, isn't it? अभी I am assuming that you already have it installed in your system. Okay, so when you have it installed in your system, as soon as you open Excel, ये पूरा पेज खुलेगा उसमें. ठीक है, now what all is there in this page? Let's see. First of all, there is a home option. Home option क्या है? Of course, this whole page क्या है? ये home खुला हुआ है. This is the home page of Excel. Okay. The next one is a new option and another one is open. So we already know, right? MS Word, MS PowerPoint, ये सब जो भी हैं. In this, when you click on new, what happens? You actually create a new file. So the same thing is here in Excel also. क्या होता है? When you click on new, it will ask you to create a blank workbook. Okay? Let's check this here. When I click on new, क्या आ रहा है? First option is a blank workbook. मतलब एकदम खाली कोरा कागज which you say. Okay, so it will give you a blank workbook option. Let us ignore the templates for now. Okay, let us just focus on the new option here. Okay, the blank workbook option. Now when you click on this blank workbook, क्या खुला? There is a blank workbook again. कोरा कागज is open in front of you. Fine. So before seeing the options, before seeing the parts which are present in this workbook, let's go back to the home page. Okay. Now we have already seen the new option. Now when you click on the open option, what will happen? Open it will show you the files which are already stored in your Excel. The workbooks. What are they called? They are called the I'll change the color. They are called the वर्कबुक. सो एक्सेल में हम एक्सच फाइल नहीं बोलते, इसको वर्कबुक बोलते हैं. दिस इज माई वर्कबुक इन एक्सेल. सो इफ यू नोटिस, सी दिस इज बुक 1, बुक 2, बुक 2, बुक 1, बुक 1. कैन यू सी दीज आर ऑल वर्कबुक्स. वर्कबुक्स के अंदर होती हैं वर्कशीट्स. Okay, so the sheets are those rows and columns वाला spreadsheet. ठीक है, spreadsheet which is called. वो sheets workbook के अंदर आती है. तो there can be n number of worksheets inside one workbook. ठीक है, we'll see that. Don't worry. Okay, then इसके बाद let us move on to the home option. Back. Let's get back to the home option. ठीक है, तो वापस हम home पर आते हैं. अब इसमें आपको क्या दिख रहा है? You can see the recently opened files here. कैन यू सी दीज फाइल्स? ठीक है, ये तो रिसेंटली ओपन फाइल्स है, मतलब अभी कुछ टाइम पहले, कुछ दिन पहले मैंने ये ओपन की थी. दीज आर द फाइल्स, राइट? अदर देन दीज हियर देयर आर टेम्पलेट्स. टेम्पलेट्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंगेजिंग टेम्पलेट्स. सो let's just try opening one of them. So maybe weekly course schedule. So when you click on one of those templates, it will give you an option to create the template. So as soon as you click on this create, it will open this template for you.
सो इफ यू सी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एंटर अ स्टार्ट डेट इन सेल C3. वी डोंट हैव टू लर्न एज ऑफ नाउ कि टेम्पलेट कैसे काम करता है. आई एम जस्ट शोइंग यू कि टेम्पलेट किस किस चीज़ में हेल्प कर सकता है. सो इफ़ यू हैव सीन माई इंट्रोडक्शन वीडियो यू वुड हैव सीन आई हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन वेडिंग प्लानिंग बजट, राइट. तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में, इतनी डेली कोर्स वाली चीज़ों में, यू नो, इन बिग बिजनेसेस टू स्मॉल हाउस होल्ड थिंग्स, एक्सेल इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट एंड फन टू यूज़. ट्रस्ट मी. यस, तो ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इसका ये स्केड्यूल है कि मंडे को क्या स्केड्यूल रहेगा. डन. यू कैन राइट योर डेट देयर, यू कैन राइट द डे देयर, राइट. यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंग टू योर विश, राइट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, सो नाउ लेट्स गेट बैक here, file option. So now let us start with a blank workbook. ठीक है, blank workbook खोलते हैं. So again I'll click here. ओके, या यू मस्ट बी थिंकिंग इतने सारे ऑप्शंस और है, वो कौन बताएगा. सो मैं बताऊंगी, डोंट वरी, बट लेटर ऑन. अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है. अभी हमको ये सीखना है कि व्हाट इज एक्चुअली अ ब्लैंक वर्कबुक, राइट. सो इफ यू सी दिस कंप्लीट पेज हियर, देर आर सो मैनी ऑप्शंस हियर यू कैन सी, राइट. तो कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, उसको हम क्या बुलाते हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड इन टुडेज लेक्चर. Don't worry, it's not going to be a very long lecture. It seems so, but it's not going to be a long lecture. We should just know the names of these options present in this entire window. Okay. Now before that, if you see this thing here, ये पूरा जो एक workspace जिसको हम बोलते हैं, yeah, just because I got reminded of it, this whole thing is called the workspace. This whole thing जिस पे आप काम करोगे, so it is the space to work. So a workspace. सिंपल टू अंडरस्टैंड. यस, ओके. अब ये जो वर्क स्पेस है, ये डोंट यू थिंक ये बहुत क्लमजी सा लग रहा है, सब कुछ मिक्सड, यू कांट यू नो एक्चुअली मेक आउट कहाँ कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है, राइट. इजंट इट? या मुझे भी लग रहा है. आई ऑलवेज फील सो. सो व्हाट आई डू, द फर्स्ट थिंग इज whenever I open an Excel workbook, what I do, I go to this option here. Can you see this option here? Yes, ये option में you will go. So first you will select all the rows and columns. So this option here, I'll highlight it here, okay. This thing here, this small option here, on this when you click, you can actually select all the rows and columns at once. Okay, so if there is some editing, something you need to do with all the rows and columns at once, just click here. Okay, can you see all of these got selected? Now what will you do? Unko, you know, visible ho clearly. For that, what you should do, just go to this thing here in the font group, right. Click on the drop down menu and select all borders, right. When you select all borders here, what happens, ये जो all borders है, इससे क्या हुआ, can you see? Just a minute please. Yeah, so if you see, ये जो all borders select किया मैंने, what happened, ये एक proper segregation came in between, right, between each row, between each column, isn't it? Yes or no? So now it is better to understand, isn't it? Yes. ठीक है. अब इसमें if you see this here, I'll click on this again, this small box here, which will select all the rows and columns. Now if you think यार बहुत छोटे छोटे rows और columns है, बड़े छोटे छोटे cells है, they are not convenient to use, or you know you might not feel very comfortable to see or read whatever is written in the cell. So what you can do here is, again, select this here and just go here near the column name here. When you see this signal here, see, one is this arrow button, the other one is this. Can you see this? This is for extending the size of this cell like this. And again, go to this row number, the end of the row number, and again pull it down. Now can you see? The blocks are bigger now, right? Isn't it easy to use? Yes, and fun it is, right? Okay, ठीक है. तो ये हो गया हमने कैसे हमको ब्लॉक्स को बड़ा करना है, how to improve your visibility actually, to be very, you know, to be very precise, right? Now let us move on to these names which we see here. So what are these names here? See, file, home, insert, draw, page layout, formulas, data, review, view, help. What are all of these called? This is actually a menu bar. Okay, this is actually a menu bar, and individually इनको हम क्या बोलते हैं? These are all called tabs. What are these called? These are called tabs. Individually file tab है, home tab, insert tab, draw tab. Okay.
These are called tabs. Collectively, they are inside the menu bar. Clear? Yes? Okay. इसके अलावा, just a minute please. Now see, what I think is, I should actually switch to a dark mode, right? So that everything is properly visible in a proper contrast, right? So let us try with that first. Right, so this is our dark mode now. Now isn't everything much more clear to see? Yes, isn't it? ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कौन से options होते हैं. So first of all, I just told you this whole thing is what? The menu bar, right? Individually, these are called the tabs. This is clear, right? अब इसके अलावा one more thing here at the top, if you see this thing, book 2. Book 2 is the title, is the name of my current workbook. So because it is showing the title, this is called the title bar. I would suggest you write it down along with me or take screenshots, whatever you wish. But yes, you should remember these names. Okay. तो ये हो गया हमारा title bar, menu bar, tabs. Okay. Now let us move on to the next segment. This whole thing here. ये जो पूरा दिख रहा है आपको, this complete thing, this is called the ribbon. Okay. Now this complete ribbon has different groups inside it. Groups in the sense, ये undo वाला group, clipboard वाला group, font, alignment, numbers, style, cells, editing and analysis. These are the different groups inside the complete ribbon. Okay. So these are what? These are the different groups, right? I hope these terms are all clear to you all. ठीक है, अब इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? Anything else? See, one more thing here is this thing. Can you see this? This is called the quick access toolbar. So in case you're not being able to find some option, you can usually get it here in this quick access toolbar. Fine. When you click on this drop down, see new, open, save, email, quick print, print preview and print, spelling, undo, redo, ascending, descending, all those things are visible easily in the quick access toolbar. So in case आपको कोई option नहीं मिल रहा है, which are the common ones of course, you can actually go to the quick access toolbar to get those options, right? Now anything else जो हमको यहाँ पर दिख रहा है जो अभी तक नहीं, I'm so sorry for this, जो अभी तक हमको नहीं दिखा, right? तो अब ये जो है, these are all ribbons. Now these are different types of ribbons. Like home के अंदर ये वाला ribbon है with different groups. Insert के अंदर this ribbon is there with different groups. Draw के अंदर different groups in the ribbon. Page layout में different groups in the ribbon. Can you see that? तो हर एक tab के अंदर there is a ribbon. In that particular ribbon, उसमें there are different groups. Fine? Is this clear to you all? ठीक है. अब हम एक चीज़ देखते हैं which is actually this thing here. ये क्या है? If you see this, yeah. So if you see this, ये क्या है? What are these? These are called the columns. Okay, and these horizontal ones are called the rows. I know बहुत बच्ची वाली चीज़ है, but many people at this age also are confused in this. ठीक है, बड़े होके भी बहुत लोग confused होते हैं कि vertical क्या होता है, horizontal क्या होता है. So columns are always vertical and rows are always horizontal. So according to this क्या है? The rows are numbered. Okay, the rows have numbers for their title. तो row number 7, row number 8. ठीक है. Columns में क्या होते हैं? There are alphabets. ठीक है. So which column? Column G, column L, column M. This is how you call it. Now the row and column together form a cell. ठीक है. तो anywhere ये जो block हम जिसको बोल रहे हैं, this is nothing but a cell. So this is properly called a cell with the intersection or with the combination of a column and a row. Okay, it makes a cell. Okay, अब हम और options देखते हैं. So here if you see sheet 1, right? So this is called a worksheet.
Okay, this is what? This is a worksheet. Now if I want to add more sheets into it, कि भाई दूसरी sheet पे कुछ दूसरा data मुझे रखना है, इस sheet पे मुझे I have to keep a different data. So what can I do? I can add by clicking on this plus button. Again I can add by clicking on this. This way I can add multiple sheets, n number of sheets. There is no limit as such. ठीक है, कितने भी sheets आप add कर सकते हो, right? So suppose I added around 13 sheets here. ठीक है? So these are what? These are the worksheets. Is this clear? Yes. और देखते हैं कौन से ऑप्शंस आते हैं यहाँ पर. So ये जो शीट्स हैं, this complete bar here, this complete bar is called the leaf bar. Yes, many people don't know this, but ये जो sheets वाला जो bar है, that is called the leaf bar. So please remember this. This is a very important term. Okay. Other than this, ये जो आपको scroll bar दिख रहा है here, see, this is helping me scroll, right? ठीक है, ये वाला भी जो स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, सो दीज आर कॉल्ड व्हाट? दीज आर कॉल्ड द स्क्रॉल बार्स. ठीक है, क्योंकि स्क्रॉलिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स दे आर स्क्रॉल बार्स. यस, सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजंट इट? ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे जो हमको पता नहीं है या जिसका हमको नाम नहीं पता है. सो एनीथिंग एल्स यू कैन सी हियर? सी नाउ, this is what? This is a zoom control. Can you see when I am clicking on this and I am holding and dragging it, क्या हो रहा है? See, I am zooming in, zooming out, zooming in, zooming out, right? So this is what? This is a zoom control here. Depends on you कि आपको कितना zoom in, zoom out करना है, just to read out something even more properly, right? It's just of that help, nothing really. ठीक है, तो ये zoom in, zoom out करने का ऑप्शन है. ठीक है, other than this there is also a shortcut for this, and that is Alt plus V plus Z. So this is also a shortcut for the zoom controls. Okay, so this is also another way, but of course जो चीज़ हमको सामने दिख रही है that is much easier to use, isn't it? है ना? तो shortcuts हर जगह काम नहीं आते, कभी कभी हमारे माउस क्लिक से भी सारा काम हो जाता है, right? Okay. एनी अदर ऑप्शन जो हमको दिख रहा है जो हमको नहीं पता है कि क्या है? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? यस, यहाँ पर है व्यू के ऑप्शंस. नाउ व्हाट आर दीज ऑप्शंस? लेट्स सी. इवन इफ यू डोंट नो समथिंग, व्हेन यू कीप योर कर्सर हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हाट विल हैपन? ये आपको दिखा देगा कि क्या है. नाउ इवन इफ यू डोंट नो, सी, नॉर्मल लिखा हुआ आ रहा है, राइट? सो दिस इज जस्ट अ नॉर्मल व्यू ऑफ द कंप्लीट शीट आई हैव ओपन. द नेक्स्ट वन इज पेज लेआउट. सो पेज लेआउट में क्या दिखागा? यूजुअली आप जो प्रिंट आउट निकालोगे शीट का, सो हाउ विल इट लुक? सो इफ यू क्लिक ऑन पेज लेआउट, सी हाउ इट्स लुकिंग लाइक, राइट? ये प्रिंट आउट वाला व्यू है, तो पेज लेआउट व्यू. द नेक्स्ट वन इज पेज ब्रेक व्यू. सो इन केस यू वॉन्ट टू ब्रेक द पेज, ठीक है, कि भाई यहाँ तक लेना है, उसके बाद नहीं लेना है. सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ तक लेना है, इसके बाद फिर दूसरा पेज लेना है, ठीक है, पूरा पेज एक साथ नहीं लेना है. सो दिस इज हाउ यू कैन ब्रेक द पेज. We'll see later on कि कैसे पेज ब्रेक करना है and all that, but अभी I'm just showing you the different views which are available. So this is the normal one. Let's get back to the normal view. ठीक है, इसके अलावा और क्या ऑप्शन है? Let's see. ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर आप देखो तो what is this? This is called the formula bar. What is it called? The formula bar. यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा जाता है फॉर कैलकुलेशंस एंड ऑल. ठीक है, सो दिस कंप्लीट थिंग हियर इज कॉल्ड द फॉर्मूला बार. तो इवन इफ यू टाइप अ फॉर्मूला हियर, इट विल एक्चुअली बी रिप्रेजेंटेड हियर. तो जो फॉर्मूला आप यहाँ लिख रहे हो, वो फॉर्मूला आपको यहाँ भी दिखेगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शो यू, लेट मी टाइप एंड शो इट टू यू. फॉर एग्जाम्पल, यू आर राइटिंग इक्वल टू sum, fine. What can I write here? I'm sorry for this. Yeah. So what can I write here? 5, 6. Okay. तो ये जो आपने यहाँ पर लिखा sum equal to sum 5, 6, ये यहाँ पर भी आ गया by default, right? Okay. So this is what is meant by a formula bar. So when I clicked enter, क्या हुआ? 11 आ गया. Now when you go back to 11, when you click on 11, क्या होगा? The formula which you had written here, ये अपने आप यहाँ पर show होने लगेगा. Right? Do you understand this? ठीक है, so this is what is meant by the formula bar. Okay? Now, what else? See, I told you that I have made around 13 sheets here.
right? I have made around 13 sheets मैंने create की. Now if I want to see, suppose I don't know how many sheets are there in the workbook, but I want to see how many sheets are there. So one way is that you click here, okay, on this arrow to scroll through the sheets. कि भाई scroll कर करके देखते जा रहे हैं कितने sheets हैं. So one way is that. Another way is what? Just right click on this arrow, okay? So let me show it to you कि वो कैसे काम करता है. So suppose I right clicked, I came here, तो इसमें क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है, right? But I want to see all the sheets at once. So any of this arrow, any of these, just right click. When I right click, क्या हो रहा है, सारे जो number of sheets हैं वो यहाँ पर आपको easily visible हो जा रहे हैं, right? So these are some of the tricks and tips, okay, so that it's easy for you to work on Excel, right? I hope you are being able to understand कि हम कैसे काम करते हैं Excel पे, right? So these are the shortcuts or the tips and tricks in which actually you can work on Excel easily, right? Acha, now let us move on to the name box here, okay? So suppose I have clicked on a cell here, or there is an active cell, suppose this. So if you see it carefully guys, see, अगर आप यहाँ पे देखो तो सपोज मेरे को D5 पे क्लिक करना है, ठीक है? सो कैन यू सी दीज एरोज हियर, राइट? तो आई वांट टू क्लिक ऑन D5. सो ये जो D5 है, वेयर इज इट विजिबल? हियर इन द नेम बॉक्स. कैन यू सी दिस? हियर जो हिंट आ रहा है नेम बॉक्स, दिस इज कॉल्ड द नेम बॉक्स. तो विच एवर योर एक्टिव सेल विल बी, वो नाम आपको यहाँ पर दिख जाएगा. योर H2. If I click somewhere here, so D10, it should be D10. ठीक है? तो intersection of columns and rows is actually making a cell here. ठीक है? तो ये हो गया name box. अच्छा, one more very interesting thing I want to tell you is how do you go to the last row or the last column? How do you do that? Let's see. भाई एक तरीका तो है कि यू कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड देन स्क्रॉलिंग कि भाई कितना नीचे जाना है, लेट्स गो. आप डबल टैप अपने डबल फिंगर्स यूज करके जस्ट कीप ऑन स्क्रॉलिंग एंड स्क्रॉलिंग. दैट्स अ वेरी टायरिंग टास्क, इजंट इट? यस और नो? ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या है गाइज? सो द शॉर्टकट इज जस्ट क्लिक कंट्रोल, ठीक है? जस्ट प्रेस द कंट्रोल की. आई एम सॉरी फॉर दिस. या जस्ट प्रेस द कंट्रोल की. सपोज यू आर हियर ऑन द फर्स्ट सेल, ओके, और मे बी, sorry for this, something is wrong. Yeah, so suppose you are here on A1 and you want to go to the last column or the last row. So just press control and the right arrow on your laptop or your keyboard. Okay, so क्या हुआ? XFD. This is the last row which is there. Okay, XFD. ये वाला जो कॉलम है ये लास्ट है, और रो कौन सी है? फर्स्ट वाली रो में लास्ट वाला सेल है कौन सा? XFD के नीचे. ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर फर्स्ट सेल. अब अगर आपको देखना है कि लास्ट कॉलम कौन सा है या लास्ट सेल जो आ रहा है पूरे टेबल का, पूरे स्प्रेडशीट का, वो कौन सा है, हाउ विल यू सी? सो अगेन कंट्रोल एंड द डाउन एरो. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये लास्ट आपका जो सेल यहाँ पर आ रहा है वो ये है, एंड दैट इज 10,48,576. तो कितने रोज एंड कॉलम्स होते हैं इसमें? 10,48,570. ठीक है, तो ये किस चीज का नंबर है? द टोटल नंबर ऑफ रोज. ओके, आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन समवेयर और यू शुड रिमेंबर दिस. टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं? 10,48,576, which is this. Can you see this? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? It's something approximately to 16,000. Okay, कितना? So it is 16,384. So this is a number which you should remember. ठीक है, तो इतने सारे रोज एंड कॉलम्स आर ऑलरेडी देयर. ऑफ कोर्स दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ एक्सेल की इससे ज़्यादा अगर आपका डेटा है सो यू कैन नॉट एंटर इनटू इट, राइट? बट दिस इज द लिमिटेशन. ऑल्दो एक्सेल में इतने सारे बढ़िया फीचर्स हैं कि यू कैन एक्चुअली इग्नोर दिस, राइट, वेन एवर पॉसिबल, इजंट इट? सो गाइज, हमारा ये एक्सेल का इंट्रोडक्शन था. सो दीज वर द बेसिक्स ऑफ एक्सेल विच यू शुड नो.
Alright, so I hope आपको ये clear हुआ है. I hope you have understood the basics, the names of the different options which are present in Excel. So now after this, in the next lecture, we'll be seeing how to create a cell, how to rename it, how to select a range of cells, and all those things we'll be seeing in the next lecture. So I hope you've understood this clearly, and I wish to see you soon in the next lecture. Till then, please keep studying, keep smiling, and take care. Bye.